हाँ जी, नमस्ते शैलेंद्र भाई, नमस्ते। बढ़िया। Start. हाँ जी, good. So, good morning everyone. We are live. So today we meet again on 26th November 2023 and we are reading Vyavahaaraatmak Janvaad, which is behavior-centered conversations, and we are referring to January 2017 edition. We started around 13 months ago. That's what Dev Bhai, dug out the information in the last meeting. And so we are at page number 109, the last sentence of page number 109 of the Hindi book. So we'll straight away go there. Moment. Yeah. So here we are. Just to connect with the where we are on chapter 7, and towards in the last 20 pages of this chapter, Babaji is talking about Das Sopani Vyavastha, the 10-stage system. उसी को परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था भी कह रहे हैं, फैमिली बेस्ड सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम. So last week we ended at the first step, Pratham Sopan. Pratham Sopan is family is the first step of those 10 steps. So we begin from the family and go up to the world family. Okay, so that's all we discussed last time. इसका लास्ट सेंटेंस था कि इसलिए हर मानव को अपने परिवार में जागृति का प्रमाण प्रस्तुत करना अभ्युदय का प्रमाण है. Therefore, evidence of awakening in their own family is the evidence of enlightenment. This is where we ended. So maybe one of you could read the remaining part of this paragraph and then we'll continue in the usual way. Who will read? हाँ, मैं पढ़ता हूँ भैया. जी भैया. अभ्युदय का तात्पर्य भी सर्वतोमुखी समाधान से ही है. इस विधि से मानव इस बात पर अपने को विश्वास स्थली के रूप में पहचान सकता है कि परिवार में समझदारी से मानसिकता, मानसिकता से कार्यव्यवहार, कार्यव्यवहार से फल परिणाम से समाधान समृद्धि प्रमाणित होने के अर्थ में परस्पर निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण करना प्रत्येक परिवार सदस्य से बन पाता है. इस क्रम में मानव अपने वैभव के संपूर्ण स्वरूप को स्पष्ट किया ही रहता है. यही रहस्य मुक्त परिवार है. सकारात्मक पक्ष में समाधान समृद्धि पूर्ण परिवार है और अभय सहअस्तित्व को प्रमाणित करने योग्य परिवार है. इसे जागृत मानव परिवार के सौभाग्य के रूप में पहचानना हर व्यक्ति द्वारा जो अन्य जागृत परिवार के सदस्य हैं सुगम हो जाता है. इसे भली प्रकार से समझ चुके हैं, इसलिए विश्वास करते हैं कि हर मानव इसे समझते हुए अपने कार्य व्यवहारों को जागृति की कड़ी से जोड़ने का प्रयास एवं प्रमाण अवश्य ही करेंगे. Enlightenment means comprehensive resolution. In this manner, one can confidently recognize that it is possible for all family members to verify by mutual examination, observation, and survey that wisdom in family leads to the evidence of mindset, mindset to the evidence of actions, actions to the evidence of results, and the results to the evidence of resolution and prosperity. In all this, humans naturally make the true form of their grandeur explicit. This indeed is the family devoid of secrets. Using positive language, such a family is full of resolution and prosperity and is capable of authenticating fearlessness and coexistence. It is easy for members of other awakened families to recognize it as the serendipity of awakened families. I have understood it thoroughly. Therefore, I am confident that in the process of understanding, all humans will surely take actions and make endeavors to link them with awakening and evidence. Good, Bhaiya. Thank you. So we'll just break up into smaller sections
for our convenience. Okay, so let us see part by part. Abhyuday ka, so the previous sentence had agreed at ended at Abhyuday. So therefore, evidence of awakening in their own family is the evidence of enlightenment. इसलिए हर मानव को अपने परिवार में जागृति का प्रमाण प्रस्तुत करना अभ्युदय का प्रमाण है. सो अभ्युदय को अभी एनलाइटनमेंट वर्ड यूज किया है. Now, Babaji is continuing with that. अभ्युदय का तात्पर्य भी सर्वतोमुखी समाधान से ही है. So, now from another angle, Babaji is explaining enlightenment means comprehensive resolution. Okay, तो सर्वतोमुखी समाधान को comprehensive resolution या all round resolution ऐसा phrases जो है वो use कर रहे हैं. तो enlightenment means comprehensive resolution. इस विधि से मानव इस बात पर अपने को विश्वास स्थली के रूप में पहचान सकता है कि परिवार में समझदारी से मानसिकता, मानसिकता से कार्य व्यवहार, कार्य व्यवहार से फल परिणाम, फल परिणाम से समाधान समृद्धि प्रमाणित होने के अर्थ में परस्पर निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण करना प्रत्येक परिवार सदस्यों से बन पाता है. Okay, so there are 4 steps in a sequence which Babaji has mentioned here. We'll just read it in English also. In this manner, one can confidently recognize. Okay, इस विधि से मानव इस बात पर अपने को विश्वास स्थली के रूप में पहचान सकता है. So in this manner, one can confidently recognize or deduce or conclude that it is possible for all family members to verify by mutual examination, observation and survey. है ना, इसको परस्पर निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण करना प्रत्येक परिवार सदस्यों से बन पाता है ना. ये वाला पार्ट it has shifted in the translation to the initial part of the sentence. So it is possible for all family members to verify by mutual examination, observation and survey that wisdom in family leads to the evidence of mindset. समझदारी से मानसिकता. ओके, तो समझदारी को विजडम कह रहे हैं एंड मानसिकता को माइंडसेट कह रहे हैं. विजडम इन फैमिली लीड्स टू द एविडेंस ऑफ माइंडसेट, माइंडसेट टू द एविडेंस ऑफ एक्शंस, एक्शंस टू द एविडेंस ऑफ रिजल्ट्स एंड द रिजल्ट्स to the evidence of resolution and prosperity. So there are 4 stages. One is wisdom or lack of wisdom or the degree of wisdom. Now, whatever is the wisdom, based on that, conclusions are there. बाबाजी लैंग्वेज यूज करते हैं, मानव अपने निष्कर्षों के साथ में रहता है. वो निष्कर्ष ठीक रहते हैं तो समझदारी है, और वो निष्कर्ष जो है वो गलत रहते हैं, मतलब एक्चुअल में रियलिटी कुछ और है और मानव का निष्कर्ष कुछ और निकला हुआ है, तो फिर उसको भ्रमित कहते हैं. तो एवरीवन हैज सम कंक्लूजन्स. ओके, वी कैन ऑल इसका निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण कर सकते हैं. दिस इज एग्जामिनेशन, ऑब्जर्वेशन एंड सर्वे. I mean, we can take as an example, we can see that there is a general notion that the more money we have, the more happy we will be. Okay, now this is a conclusion which is many people have accepted, but it is not reality, because if this was reality, everyone who had more money should be happier also. Okay, but by looking at ourselves, by looking at people around us, and by looking from the media reports and whatever we hear from strangers also, we also know that when we go to verify this notion, this is not correct. Okay, if money were to make a person or a family happier, then, and more money means more happiness, then people with more money should actually be happier.
but we can very easily see a lot of contradictions to this. No. So this is Brahm, this is delusion, this is the wrong conclusion. But whether it is wrong or right, it is still a conclusion with a person or with a family, and then they are governed by those conclusions. Okay, these conclusions is what Babaji is saying is in the mindset. This is the mentality. So समझदारी से मानसिकता और मानसिकता से कार्य व्यवहार. So wisdom in the family leads to the evidence of mindset, and then mindset to the evidence of actions. So whatever is the mindset, whatever are the conclusions, actions are based on that. So if we believe that money will make us happier, then the energies of the family, of the individual are channelized toward making more and more money. Okay, so this is mindset leads to the evidence of actions. As per the mindset, actions happen. Now the new thing which Babaji is saying is the mindset is dependent on wisdom or delusion, whether a person is deluded or whether a person is wise, whether a family is deluded or whether a family is wise. So the first stage is wisdom in the family leads to the evidence of mindset to the evidence of actions, and as per the actions there will be results. So actions lead to the evidence of results, and the results of the evidence of and results to the evidence of resolution and prosperity. Okay, so those results are in the sense of resolution and prosperity only. कि फल परिणाम से समाधान समृद्धि परस्पर प्रमाणित होने के अर्थ में परस्पर निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण करना प्रत्येक परिवार सदस्यों से बन पाता है. So like this is how I interpret this part of the paragraph. We can read the remaining one also. इस क्रम में मानव अपने वैभव के संपूर्ण स्वरूप को स्पष्ट किया ही रहता है. In all this, humans naturally make the true form of their grandeur explicit. Okay, whatever their potential is, whatever they can do, that is achieved. Okay, when we are living with wisdom. यही रहस्य मुक्त परिवार है. This indeed is the family devoid of secrets. Okay, I do not know. Secrets is not I do not like the word secret here because it doesn't convey what Hindi is conveying. यही रहस्य मुक्त परिवार है. Okay, like for a family which has, now this is a family which has understood everything. Okay, तो अब रहस्य को मिस्ट्री भी कह सकते हैं, सीक्रेट्स भी कह सकते हैं, लेकिन it is not as good as it is in Hindi. So maybe one is we could use it. The sense I am getting is we could say delusion. This indeed is the family devoid of delusion. Okay. The way I interpret it is रहस्य मुक्त परिवार का मतलब क्या है? I hear a lot of elders around me. This is a very good technique which Babaji has said, Nirikshan, Parikshan, Sarvekshan, which is, examination, observation and survey. So look at myself and my family, look at other families and other individuals around me whom I know very well. And then, there is a third degree, which is, like not so well known, but we still hear stories about them. So by examination, observation and survey, this is a right. This is something which all of us can do. We actually do also. So when I am doing it, what I realize is that there are a lot of people around us who have become old, but still they are, full of, let's say, unhappiness and the dissatisfaction in relationships. And the statements which I often hear is, we do not know what we did wrong that we have to see these days. Okay, we deserved better. We put so much of effort, for others, but eventually nobody appears to be doing something for us, and they do not realize
that they do not even know what went wrong. So you have spent your whole life to achieve some result. Okay. You put a lot of effort towards that. Still, you did not get result. And more so, you do not even know why you did not get the result. This is rahasya. Okay. This is rahasya. I mean, when we want to do something, when we know its process, we are able to do it. I want to cook food. I know how to cook food. I am able to cook food, and I certainly cook food. I want to drive my car and go somewhere. It takes me 1 hour to reach there. I know the driving. I know the route. I certainly reach where I want to reach. Okay. So there are no unknowns in this thing. Okay. And that is what gives us the confidence. Rahasya is, what I wanted to do and thought that after doing this, I will achieve this. I have done all that. I did not achieve what I wanted to achieve. And I still do not know why I did not achieve what I set out to achieve. This is mystery or secret, or I do not know. This is the word. I think if some of you can suggest it, can we just say delusion, or is secret good, or is there some other word we can think of? This indeed is the family devoid of what? यही रहस्य मुक्त परिवार है. हाँ जी शिल्पा दीदी. हाँ नमस्ते भैया. जी उसको नमस्ते. स्लैश करके illusion, I was thinking delusion slash illusion, I don't know. Anyone else? I have two here. Since you use the word certainty in positive way, I think we can use devoid of ambiguity or uncertainty. Okay. Ambiguity. Yes. So ye uncertain. Okay. You are saying ambiguity also. Okay. So uncertainty is probably, like initially as soon as I read this indeed is the family devoid of uncertainty. बाबा जी ना बार बार निश्चितता और स्थिरता इसकी काफी बात करते हैं, तो ये रहस्य मुक्त का मतलब भी यही है, अनिश्चितता खत्म हो जाती है एक्चुअल में. So, well, to me, out of these, maybe uncertainty looks the best of these five, but maybe there could be other views or other words also. Anyone else? Any suggestions? Uncertainty is good, sir. Okay, good. Good evening, Divya. I was liking delusion as well. Thank you, sir. Good morning. Namaste, Sabiko. Namaste. So I was thinking delusion was also good, but uncertainty is better. देव भाई अनसर्टेनिटी ठीक लग रहा है? अनसर्टेनिटी से सेंस कन्वे हो रहा है ना? जी भैया. जी भैया अनसर्टेनिटी ठीक लग रहा है. Okay, this indeed is the family divide of uncertainty. Babaji has repeatedly mentioned in the books, in Madhyas, in all his books and all his dialogues also, humans seek out certainty. Okay, it is only in the areas where we are uncertain that we have fears. Okay, so we humans are seeking out the certainty. So this indeed is the family devoid of uncertainty. यही रहस्य मुक्त परिवार है. आगे बढ़ते हैं. सकारात्मक पक्ष. भैया मैं यहाँ पे आपसे परमिशन लेना चाह रहा था. हाँ बोलिए भैया. मेरी डॉटर है 23 इयर्स की और अभी उसने थोड़ा सा इस कंटेंट को भी एक्सप्लोर किया है, तो क्या वो ज्वाइन कर सकती है क्या अभी इसमें? हाँ कर सकते, ज्वाइन करने में क्या. देखिए शुरू में एनी न्यू पर्सन व्हेन ही जॉइंस, वेदर दे आर आवर फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स, दे कैन बी इन लिसनिंग मोड जस्ट टू गेट अ सेंस ऑफ व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड, है ना. देयर इज नो हार्म. वो मैंने उसको ऑलरेडी बोल दिया है, पर आपके ये जो एक्सप्लेनेशन प्लस मैं थोड़ा उनको हिंदी में प्रॉब्लम होती थी, यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों चल रहा है, तो मैं चाह रहा था, और उन्होंने भी यस किया, और संडे फ्री भी रहता है. ठीक है, वेरी गुड. हाउ 23 years ना? ओके, या श्योर, she can join. Most welcome. Okay,
तो यही रहस्य मुक्त परिवार है। सकारात्मक पक्ष में समाधान समृद्धि पूर्व परिवार है, पूर्ण परिवार है, और अभय सह अस्तित्व को प्रमाणित करने योग्य परिवार है। Using positive language, such a family is full of resolution and prosperity and is capable of authenticating fearlessness and coexistence. Okay, so this is straightforward. The only thing which took me some time to understand is इसको जो कह रहे हैं सकारात्मक पक्ष में और using positive language. So the previous part is not a positive language. Okay, like absence of something bad. Okay, so this is one type of language, absence of something bad. This indeed is the family devoid of uncertainty. Okay, so I am not a bad person. This is one way of saying something. I am a good person. This is another way of saying something. Okay, I live with prosperity. This is one way of saying something, and I do not lack any physical or material things. This is another way of looking at it. So here the language is devoid of uncertainty. So something wrong is there in good families or in wise families. This wrong thing or this uncertainty is not there. Now the inputting in other words, which is sakaratmak paksh mein, using positive language, such a family is full of resolution and prosperity. Hanji Shilpa Didi. भैया, like I've heard on a positive note ऐसे लिखते हैं, so I don't know. ऐसे भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है. I agree. इसको वैसे भी कर सकते हैं, on a positive note. बढ़िया हो गया. Such a family is full of resolution and prosperity and is capable of authenticating fearlessness and coexistence. इसे जागृत परिवार के सौभाग्य के रूप में पहचानना हर व्यक्ति द्वारा जो अन्य जागृत परिवार के सदस्य हैं सुगम हो जाता है. इसे भली प्रकार से समझ सकते हैं, समझ चुके हैं. It is easy for members of other awakened families to recognize it as the serendipity of awakened families. I have understood it thoroughly. ठीक है, तो इसे जागृत मानव परिवार के सौभाग्य के रूप में पहचानना. So any one family who achieves it, other families who are already awakened, for them it is very easy to recognize that this family has also now become wise. Okay, इसे भली प्रकार से समझ चुके हैं. Like Babaji has not mentioned the word मैं here, but I think the overall sense is इसे हम भली प्रकार से समझ चुके हैं. I have understood it thoroughly. So it is easy for members of other awakened families to recognize it as the serendipity of awakened families. This word serendipity, like I have heard earlier also, not used it quite often. इसको हमने सौभाग्य के लिए use किया है. Okay, so I just wanted to share with you so that we are clear about its meaning, and if someone has some other suggestions, we can look at that also. One moment. Now I will share the screen. So, yeah, one moment. Okay, you can see this is an online dictionary. So serendipity, the meaning of serendipity is the faculty or phenomenon of finding valuable or agreeable things not sought for also, or an instance of this. Okay, the phenomenon of finding valuable or agreeable things. इसको ये शायद सौभाग्य को भी मैं ऐसा ही इंटरप्रेट कर रहा हूं, that good things happen although we are probably not directly seeking them out.
नीचे जो है ना, इसने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में ऐसा भी बताया, पूछा है, आर सेरेंडिपिटी एंड फेट रिलेटेड? सो व्हाट दे आर एक्सप्लेनिंग इज serendipity and fate differ in meaning in a number of ways. The former is serendipity is defined as the faculty or phenomenon of finding valuable or agreeable things not sought for, while fate likewise may be concerned with something that happens to a person. It need not in fact be pleasant. So fate can be cruel also. Serendipity cannot be cruel. It is always positive. Okay, so that is the difference between serendipity and fate. So fate can be positive or negative, good or bad. Serendipity is only pleasant. Similarly, serendipity and luck also, is there any difference? So they are explaining here also that while luck has a somewhat broader range with meanings such as a force that brings good fortune or adversity. Okay, so again, luck includes the adverse part also. Serendipity does not include any adversity. So मुझे ये सौभाग्य के लिए ऐसा एक अच्छा choice लगा. But if there are some other words we can use for it, we can consider that. Just because we are discussing this word, so there is a movie with the name Serendipity, and from that, after watching that movie only, the word meaning was clear to me. It's a fantastic romantic movie, 2001. Okay. So but yeah, this meaning suits here. Oh, I did not know there is a movie with that name. Okay. ठीक है, तो ये इस सेंस में इसको सौभाग्य को रखा है. So it goes well, sir, like at least I ठीक है, good to hear that. ठीक है, इसलिए विश्वास करते हैं कि हर मानव इसे समझते हुए अपने कार्य व्यवहारों को जागृति की कड़ी से जोड़ने का प्रयास एवं प्रमाण अवश्य ही करेंगे. Therefore, I am confident that in the process of understanding, all humans will surely take actions and make endeavors to link them with awakening and evidence. ठीक है, तो अपने कार्य व्यवहार को सीधा सिंगल वर्ड यूज कर लिया, एक्शंस को. तो ऑल एक्शंस विल बी कनेक्टेड और लिंक्ड विद अवेकनिंग. This is what Babaji is concluding here. All humans will surely take actions and make endeavors to link these actions with awakening and evidence. हम जो कुछ भी कर रहे हैं is eventually taking us and our families and whatever of any other system we are part of, is that system and I as individual going towards wisdom or not? This is a check which has to be done continuously. And when one is on this path, what Babaji is saying is, I am confident that in the process of understanding, this will certainly happen. All humans will surely take actions which will take them or link them with awakening and evidence. Okay, so this completes this paragraph. Any comments or any doubts? Otherwise, we can proceed further. Okay, so I take it as a okay. So now we go to the next paragraph. कौन पढ़ेंगे इसको? मैं पढ़ लेती हूँ भैया. जी दीदी. भ्रमित संसार में भी हर व्यक्ति एक दूसरे की नसजाल को जानते ही हैं अथवा हर बात को पहचानते रहते हैं. भ्रमित मानव परिवार में हर व्यक्ति एक दूसरे के दोषों को भी पहचानते रहते हैं. ऐसे पहचानने के आधार पर एक दूसरे के प्रति विश्वास पूर्ण विधि नहीं बन पाती है. एक छत के तले अवश्य ही रहते हैं. इस दुर्भरता में घुटन बनी ही रहती है.
परस्परता में अविश्वास बढ़ता जाता है। अविश्वास के कारण अपने अधिकारों को वस्तु केंद्रित किए जाना एक विवशता बन जाती है। ऐसी विवशता एक दूसरे के बीच खाई का काम करती है। फलस्वरूप असंतुष्टि का विस्तार होता ही जाता है। जितना ज्यादा असंतुष्टि का विस्तार होता है, उतना ही ज्यादा संग्रह सुविधा पर स्वामित्व को पाने का प्रयत्न होना पाया जाता है। फलस्वरूप व्यक्तिवादिता उभर जाती है। परिवार में सुखी होने के लिए जीने की शुरुआत करते हैं। इसके विपरीत व्यक्तिवादिता में पहुंच जाते हैं। यही संपूर्ण समस्या का कारण है। Even in the deluded world, people know each other's reality, the disguises and manipulations. In deluded families, the members are aware about each other's shortcomings too. And however, only recognizing each other's shortcomings doesn't provide any basis for living trustfully, although the family members continue to live under the same roof. Suffocation is inherent in such living. Mutual distrust keeps on increasing. Due to distrust, to shift focus to material objects to protect one's rights gets infringed becomes a compulsion. Getting infringed becomes a compulsion. Such compulsion acts as a rift in the relationship. As a result, mutual dissatisfaction keeps on increasing. It is found that as this dissatisfaction increases, the effort towards accumulation and acquisition of comforts also increases. As a result, individualism reigns supreme. While their original objective was to live happily in the family, somehow individualism takes over. This is the root cause of all problems. An amazing paragraph. Exactly, an amazing paragraph in a Like very mirror in a to very society. बहुत हाँ जी बढ़िया इसमें एनालिसिस है. yes okay, so it does not contain, I think, any keyword or many keywords, okay, but overall the sense is or the meaning is very impactful. We'll just split it in 2 or 3 parts. भ्रमित संसार में भी हर व्यक्ति एक दूसरे की नस जाल को जानते ही हैं. ओके, नाउ नस जाल को जानते हैं, दिस इज लाइक दे नो ईच अदर्स रियलिटी, बट ये नस जाल वर्ड थोड़ा सा नेगेटिव है. ठीक है, लाइक तो उसको दोषों के रूप में कह रहे हैं. ओके, अथवा हर मानव हर बात को पहचानते रहते हैं, एक दूसरे की हर बात को पहचानते रहते हैं, और भ्रमित मानव परिवार में हर व्यक्ति एक दूसरे के दोषों को भी पहचानते रहते हैं. तो ये नस जाल को जो है, अभी तो मैंने इसको रियलिटी वर्ड लिखा और फिर ब्रैकेट में लिख दिया द डिस्गाइजेस एंड मैनिपुलेशंस. ओके, दूसरा बंदा भी कुछ कर रहा है, वो उसमें कुछ मैनिपुलेटिव इंस्टिंक्ट्स हैं, है ना, वो दूसरों को इरिटेट करता है, इस सब को एक तरह से थोड़ा सा मेरे को ऐसा सेंस आ रहा है, ये नस जाल जो है ये पॉजिटिव सेंस में वर्ड नहीं यूज किया गया है. तो भ्रमित संसार में भी हर व्यक्ति एक दूसरे के नस जाल को जानते हैं, एक दूसरे के. दीज आर नॉट स्ट्रेंजर्स, दीज आर people within the family, people with whom we have daily interactions or frequent interactions. They could be our close friends also. So even in the deluded world, people know each other's reality, the disguises and manipulations. Okay, इस तरह से रखा है. आप इसको सजेस्ट कर सकते हैं हाउ टू इम्प्रूव इट. अथवा हर बात को पहचानते रहते हैं, ये इसी में आ ही गया. भ्रमित मानव परिवार में हर व्यक्ति एक दूसरे के दोषों को भी पहचानते रहते हैं. इन डिल्यूडेड फैमिलीज द मेंबर्स आर अवेयर अबाउट ईच अदर्स शॉर्टकमिंग्स टू. ना, तो दोष को शॉर्टकमिंग करके चल रहे हैं. ऐसे पहचानने के आधार पर एक दूसरे के प्रति विश्वासपूर्ण विधि नहीं बन पाती है. However, only recognizing each other's shortcomings doesn't provide any basis for living trustfully. है ना, विश्वासपूर्ण विधि को बोला living trustfully.
एक छत के तले अवश्य ही रहते हैं, although the family members continue to live under the same roof. Okay, they are living within the same four walls, but still they are not able to live trustfully. Okay, so they understand each other's shortcomings. Okay. इस दुर्बलता में घुटन बनी ही रहती है. Suffocation is inherent in such living. Okay, when we are living like this, when we do not trust the people with whom we are living, everyone is irritating everyone else on a daily basis or very frequently. Okay, so this is basically a suffocation. Okay, so इस दुर्बलता में घुटन बनी ही रहती है. Suffocation is inherent in such living. परस्परता में अविश्वास बढ़ता जाता है. Mutual distrust keeps on increasing. अविश्वास के कारण अपने अधिकारों को वस्तु केंद्रित किए जाना एक विवशता बन जाती है. Due to distrust, to shift focus to material objects to protect one's rights getting infringed becomes a compulsion. Okay, because a person A is afraid that his or her rights will get infringed. Okay, others will sort of not live trustfully, so then this person also starts to focus on the material objects more. This is the reason we very frequently see, with the passage of time, even like all over the world, I think till a few decades ago, there was, in a family, the wealth was generally a common pool. Okay, even if parents and children and grown-up children are there, like they'll used to live like a commune, like a family, and the wealth was common and it was used wherever required rightfully. But as this as with the passage of time, people started feeling that maybe others are being clever or manipulative or not fair. People keep their personal wealth apart. Okay, so it is not only between generation to generation or between brothers and brothers, even husband and wife also at many situations nowadays I realize that निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण से ये पता चलता है कि wife keeps her money apart, the husband keeps his money apart, how much I will contribute to the household expenses and how much will remain my personal wealth. ये सारा का सारा जो है ये फोकस शिफ्ट होना शुरू हो जाता है. ठीक है, एक ही घर में एक टीवी रहता था और उसको लोग आपस में देख लेते थे. Suddenly you realize that one person has sort of taken a monopolistic right over the TV, and 24 hours only one person is watching. Then another person's complain that we also have to watch TV, so you need another TV and then another TV. Okay, so like this is what is happening. ठीक है, ये आपका टीवी हो गया या मेरा टीवी हो गया, आपको भी टीवी देखना है, मेरे को भी टीवी देखना है. Okay, so this is what is being said here कि वस्तु केंद्रित जीना जो है ना वो एक विवशता बन जाती है. Right? So इसको जो है यहाँ पर ऐसा कहा, due to distrust, to shift focus to material objects to protect one's rights getting infringed becomes a compulsion. एक विवशता बन जाती है. ऐसी विवशता एक दूसरे के बीच खाई का काम करती है. Such compulsion acts as a rift in the relationship. फलस्वरूप असंतुष्टि का विस्तार होता ही जाता है. As a result, mutual dissatisfaction keeps on increasing. Okay, in Indian context, we very frequently see that there are sort of, let's say, parents and they have two children. Both of them have grown up and both of them have their own families. They got married. Like one of them is earning less money. One of the children, other person is earning more money. Some of parents have their own thought that like the other person should have more money.
these people who are making more money, they think that we are working hard, so we are getting more money. These guys are not working hard. They do not get money. Why should I pay them money? Okay, so everything is revolving around money. ये सिर्फ मेरे को दिखता है, only I see this around me, और आप सबको भी दिखता है? भैया एक्चुअली वो टीवी वाला एग्जांपल बोल रहे थे, मेरे को ध्यान आया कि पहले एक घर में एक टीवी नहीं, पहले कई घरों में एक टीवी होता था। कई घरों में एक टीवी होता था, राइट। और अभी मैं कभी कभी कुछ फ्लैट्स, न्यूली बिल्ड फ्लैट्स के वीडियोस जो डालते हैं प्रॉपर्टी वाले बिल्डर्स, उनके वीडियोस देखता हूँ तो उसमें बोलते हैं कि आपको 2 बेडरूम 3 बेडरूम, आपको हर रूम में टीवी पैनल दिया गया है। मैं उसमें सोचता हूँ कि क्यों दिया गया है, मतलब किस लिए जरूरत है उस चीज की, बट दैट इज अ सेलिंग पॉइंट फॉर देम। इट्स क्वाइट ऑड। ठीक है। And like these are the reasons that elders in the current society are not able to live in a right way, with a satisfaction in relationship. I see the younger generation, when they are growing up and their time to get married is coming, they are actually scared of marriage. बच्चे शादी करने से ही घबरा रहे हैं। मतलब लाइक आदमी जो कुछ भी करता है वो सुखी होने के लिए करता है, और जिस तरह से आजकल शादियां होने के बाद माहौल दिखता है, बच्चे को लगता नहीं है कि मैं सुखी होऊंगा शादी के बाद में। तो फिर ये लगता है कि अगर मुसीबत ही आनी है तो बाद में आए। सो दैट इज व्हाई वी आर सीइंग डिलेड मैरिजेस, है ना। मुसीबत आनी है तो 25 साल की उम्र में क्यों आ जाए, 30 में आए, 35 में आए, है ना। 5-10 साल तो और थोड़ा सा ठीक से निकल जाए। सो इट इज ड्यूटी ऑफ वी, जस्ट 1 minute प्लीज। Yeah, sorry. So okay, so this is the duty of elders in the society to show right models of family living with satisfaction in relationships, so that children get confidence that living in a right way is possible. Okay, I mean, in today's world there are very few examples, very rare examples which we can show to children that look at this family, they are living like happily. We can show many families who have a lot of physical facilities and who have a lot of wealth, but we cannot find enough number of families to show to children or to verify for ourselves who are living right. इसको जो है वो बाबा जी पूरा जो है इस चीज को कह रहे हैं, ये जो फीलिंग्स वाला पार्ट है ना, मेरे को अच्छा लगे परिवार में रहते हुए, दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। ओके, ये होगा कैसे, ये इसका मानव जाति के पास में अभी तक ज्ञान नहीं था, है ना। सबने अपने अपने तरीके से कुछ कुछ कोशिशें की, उस कोशिशों में कुछ कुछ परिवार सफल हुए, लार्जली असफल हुए, है ना। असफल परिवारों की गिनती बढ़ रही है समय के साथ में। Spencer, is it true only in the Indian context, or do you see it, over there also in Canada or USA or? Sorry, which thing specifically? That delayed marriage is what you're saying? And satisfaction in relationships. Oh, satisfaction as well. I don't know. I'm not sure. Because I have to do more observation. Because I can think of examples, definitely not as much marriage, but doesn't mean maybe not as much satisfaction. I'm not sure. I have to think about that a little bit more. See, I remember a few months ago. भैया वहाँ पे इतना डर नहीं रहता है, क्योंकि डिवोर्स बहुत आसान बात है, और यानी कि ये बस एक तरह की स्टाइल ही वहाँ अलग है। और यहाँ डिवोर्स की मानसिकता में रहते कई कपल पूरी जिंदगी नहीं, लेकिन वो ठीक है, बट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क स्पेंसर आल्सो। व्हेन वी लुक एट डिवोर्स, is divorce a desirable thing? How does the society look at it?
I mean, when someone gets married, they are looking forward to getting divorced in 5 or 10 years, or they do not know how to live right, so divorce happens. Yeah, and even though divorce is quite common here, I know a few people within my extended family who have been divorced, like aunts and uncles or cousins. I can name quite a few. So it is common, but it's still, I can see it's a little bit more shameful. Like they're not something very proud or happy about it, obviously. So usually you don't talk about it so much directly in the family. You have to gain some trust with the person, and then maybe, you can have a conversation about it, but they won't be sharing very They won't openly open up with the each. whole family. No, not with the whole family. It's you Yes. can see despite it being normal, there's lots of I would guess shame in it would be the word. Exactly. This is not something to be proud of. No. Okay, so this is universal. This is universal. Okay, this is what I think that we can all try to see, whether it happens in India or whether it happens in USA, Canada, or Europe. From where Spencer belongs, to that geography, to a different culture, to a different religion. There also, when people get divorced, although more and more people are getting divorced with every passing decade, it is still not something to be proud of. Okay, you do not know how to live right, so more divorces are happening. So we sort of reconcile to the fact that it is cruelty of fate. But even then the desire is to live as a happy family. Okay, there the ability is lacking. Is it a correct observation, Spencer? Yes, yeah, I would say so. Okay, so like we remember a few months ago we were discussing with you that when marriages happen in Christianity, there are those vows which they take, till death doeth us apart. ओके जब तक हमको मौत जुदा नहीं करेगी तब तक हम शादीशुदा रहेंगे, ऐसा वहां पर पादरी ये भी कसम दिलाते हैं. लेकिन फिर बट इवन इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट डिवोर्सेस आर occurring, and people do not like, they do not even want to talk about it. This is what like this is a new viewpoint I've got from Spencer. Thanks for sharing it openly. It's good for all of us to understand this as a family, universally all over the world, wherever people are getting married, they want to spend happily married life, and living with satisfaction in relationships is the foundation of a happy married life. Okay, and a family is naturally revolves around husband and wife. Okay, so if they themselves are not able to live with each other, this is the true problem. So good, I think we'll just complete it. जितना ज्यादा असंतुष्टि का फलस्वरूप असंतुष्टि का विस्तार होता ही जाता है. Okay, as a result, mutual dissatisfaction keeps on increasing. जितना ज्यादा असंतुष्टि का विस्तार होता है, उतना ही ज्यादा संग्रह सुविधा पर स्वामित्व को पाने का प्रयत्न होना पाया जाता है. It is found that as this dissatisfaction increases, the effort towards accumulation and acquisition of comforts also increases. फलस्वरूप व्यक्तिवादिता उभर जाती है. As a result, individual reigns supreme. परिवार में सुखी होने के लिए जीने की शुरुआत करते हैं, इसके विपरीत व्यक्तिवादिता में पहुंच जाते हैं. While the original objective was to live happily in the family, somehow individualism takes over. यही संपूर्ण समस्या का कारण है. This is the root cause of all problem. यहाँ पर एक पॉइंट और दिखाई दिया. असंतुष्टि की वजह से जो व्यक्तिवादी या संग्रह सुविधा की तरफ जो बढ़ने का होता है,
कभी कभी भैया इसमें मैं जो देख पा रहा हूँ कि अगर ये ऐसा नहीं हो पाता, ठीक से जीना नहीं हो पाता है या असंतुष्टि होती है, तो ये कई बार विरक्ति का कारण भी बनती, वो भी व्यक्तिवादी की तरफ ही है। वहां एग्जैक्टली संग्रह सुविधा नहीं होकर के संग्रह सुविधा से दूर भागना या विरक्ति की तरफ जाना, ऐसा भी हो पाता होता हम्म, बिल्कुल ठीक है। ये अगला पैराग्राफ में आने वाला है थोड़ा सा। है। अच्छा, Okay, we just wait till the next paragraph. Exactly what you are saying that will get covered. जी शिल्पा दीदी। भैया एक तो मुझे पूछना था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वामित्व, वैसे क्या मतलब होता है? ओनरशिप। ओनरशिप, ओके। हाँ, ज्यादा संग्रह सुविधा पर स्वामित्व, जैसे स्वामी होता है ना किसी चीज का, स्वामी मालिक। ओके। एंड दूसरा आई जस्ट हैड अ सजेशन कि जो पहले वो ब्रैकेट्स में वो डाला था ना डिसगाइज, उसकी जगह प्रिटेंशियस भी डाल सकते हैं। हाँ डाल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, प्रिटेंशंस भी डाल सकते हैं। प्रिटेंडिंग जिसको अभिनय कहा था हमने, अगर हमको सेकंड चैप्टर का टाइटल इफ वी रिमेम्बर, है ना, अभिनय और उसका परिणाम, तो प्रिटेंशंस एंड मैनिपुलेशंस। So basically, just to give a small angle from another side, and a thought that is coming to me is, see, when we live happily in relationships, we trust our family members that, like maybe in old age or when I get sick or when I need, I can trust people around me, they will take care of me. Okay? So then that is a different feeling. But the more one has a distrust for people around us, the more you want to keep an old age corpus for you. When I grow old, probably nobody else will take care of me. So I have to make sure that I am not in a deprived or poor state when I grow old. So then I want to keep my money with myself, and the younger generation and everyone wants to keep their money with themselves. So that common pool of money, which could be used, in a more fruitful manner in families which are living trustfully. Contrary to that, when the lack of trust is there, then everyone wants to have their own bank balance, want to have their own assets, because they are worried for their own future. Okay, this is Vyaktivadita. This is individualistic approach. This is a compulsion. If there is overall wisdom is lacking, one can't help it. I mean, they can't think of anything else, which probably is, इसी को बाबा जी ने विवशता कहा है। ये एक मजबूरी है, कंपल्शन है। ठीक है, तो अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। मूव टू द नेक्स्ट पैरा। कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ देता हूँ उसको। हाँ जी दिव्य, प्लीज। ब्रह्मवश अकेलापन सदा विरोध अथवा भय के स्वरूप में ही गण्य होता है। अकेलेपन से मुक्ति तभी हो पाती है जब परस्परता में विश्वास हो। कहीं न कहीं मानव अतिरिक्त विश्वास के लिए तड़पता है, चाहे जीव जानवर के साथी क्यों न हो। इसकी कोई चिन्हित पहचान नहीं हो पाती है, इसलिए बारंबार विश्वास का आधार बदलता है और बदलते बदलते थकना भी कहीं हो जाता है। पुनः किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ विश्वास सूत्र को जोड़ने का प्रयास भी करता है। मानव अपने में विरक्ति और भक्ति की मान्यता से साधनारत होना पाया जाता है। इसे कहीं अपने में संतुष्टि पाने के लिए साधना, अभ्यास, योग, चिंतन, गायन, प्रार्थना, विलपने के क्रम में गुजर जाता है। गुजरते गुजरते थक जाना भी होता है। कोई आश्रित घटना अर्थात मनोकामना सफल होने की स्थिति में सिद्धि हो गया है मान लेते हैं, न होने की स्थिति में ज्ञान हो गया मान लेते हैं। पुनः सर्वाधिक ऐसे साधक किसी मानव के साथ अपनी पहचान को स्थापित करने में प्रयत्नशील होते हैं। ऐसे प्रयास में कोई कोई काफी भीड़ इकट्ठा करने में सफल हो जाते हैं। जितना बड़ा भीड़ उतना बड़ा सिद्ध अथवा ज्ञानी माने जाते हैं। ऐसे ज्ञानी और सिद्धों की सूची बड़ी होते हुए भी मानव परंपरा ब्रह्मजाल में यथावत बनी हुई है, क्योंकि सर्व मानव में समझदारी सुलभ हुई नहीं है। मानव लक्ष्य, जीवन लक्ष्य का प्रमाण लोकव्यापीकरण हुआ नहीं है। यही मुख्य मुद्दा है। इसी विफलता के आधार पर
सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज बना नहीं है। यही संकट आज के लिए समस्त प्रकार की समस्या का कारण है। इसी भ्रमवश हर मानव भय, प्रलोभन और समस्याओं के लिए स्रोत बना हुआ है। इससे छूटने से ही मानव कुल का कल्याण है। Under delusion, loneliness is always categorized as opposition or fear. One can overcome loneliness only when there is mutual trust. Humans are always striving for some extra bit of trust, even if it is in the company of animals or birds, as it is difficult to recognize precisely in the bracket because trust is not predictable by senses. The basis of trust keeps on changing. Somewhere in all this, one feels completely dejected, and the person makes fresh efforts to establish trust with another person or stranger. Driven by the mindset of detachment and devotion, some individuals pursue sadhana and for their own साधना satisfaction, sadhana, and for their own satisfaction, go through the processes like yoga, ruminating, singing, praying, and lamenting. It often leads to exhaustion. If their wishes get fulfilled, they attribute it to a miracle. Else, they conclude that they have become wiser. Again, the majority of such seekers keep on striving for establishing their identity with other humans. In such efforts, some are successful in gathering large crowds and having huge following. Bigger the crowd, the more knowledgeable and scholarly the person is assumed to be. Despite there being a long list of such scholars, human tradition continues to be in delusion as it is. It is so because wisdom didn't reach everyone, and because widespread evidence of human aspiration and Jivan aspiration is yet to be seen. This is the main reason due to which universal systems and undivided society couldn't be established so far. This is the main reason behind all the problems being faced today. It is due to this delusion that all humans, driven by fear and temptation, have become originators of problems. There is liberation for humans only when they free themselves from these. गुड, थैंक यू दिव्य। थोड़ा सा लंबा पैराग्राफ है, लेकिन आई थिंक अगेन देयर आर नॉट मेनी कीवर्ड्स हियर, इट्स अ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट वी see around us. So we'll just look at it sentence by sentence. भ्रमवश अकेलापन सदा विरोध अथवा भय के रूप में ही गण्य होता है ना। तो ये जो पिछले वाले सेंटेंस में व्यक्तिवादिता की बात हो रही थी, ये व्यक्तिवादिता या इंडिविजुअलिज्म जो है, इंडिविजुअलिज्म इज एक्चुअली वो इवेंचुअली अकेलापन जैसा ही है। तो बाबा जी ही इज पुटिंग दैट थ्रेड एंड कंटिन्यूइंग, भ्रमवश अकेलापन सदा विरोध अथवा भय के रूप में ही गण्य होता है। Under delusion, loneliness is always categorized as opposition or fear. Okay, it is so. In other words, it is only because of opposition or fear that one becomes lonely. Otherwise, one wants to be in the company of others. Okay, so loneliness indicates that there is either some conflict, some opposition, or there is fear. तो विरोध या भय के कारण ही अकेलापन होता है। Under delusion, loneliness is always categorized as opposition or fear. अकेलेपन से मुक्ति तभी हो पाती है जब परस्परता में विश्वास हो। One can overcome loneliness only when there is mutual trust. Okay, whatever we are reading today, Babaji is again and again talking about trust or lack of trust. Okay, so in relationships, जो है वो ट्रस्ट इज द फाउंडेशन वैल्यू। बाबा जी वो मूल्य है ना, परिवारों में, संबंधों में जीते हुए 9+9 वैल्यूज आर देयर, फीलिंग्स आर देयर, टोटल 18 वैल्यूज आर देयर इन रिलेशनशिप्स। उसमें ट्रस्ट जो है वो फाउंडेशन वैल्यू है, आधार मूल्य है। ठीक है, तो परिवार की बात हो रही है। परिवार में वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिली इन दिस सेक्शन व्हाट वी आर रीडिंग टुडे। इन फैमिली रिलेशनशिप्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड इन रिलेशनशिप्स ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो उसी को बाबा जी बार बार विश्वास की बात कर रहे हैं।
अकेलेपन से मुक्ति तभी हो पाती है जब परस्परता में विश्वास हो. One can overcome loneliness only when there is mutual trust. कहीं ना कहीं मानव अतिरिक्त विश्वास के लिए तड़पता है, चाहे जीव जानवर के साथ ही क्यों ना हो. Humans are always striving for some extra bit of trust, even if it is in the company of animals or birds. So, maybe if someone finds that, if someone has concluded that, all humans are, not to be trusted and you cannot trust anybody, eventually you start living with pets. Okay, you keep a squirrel, or you keep a cat, or you keep a dog, and then you want to live happily with the dog, because living happily with humans has become impossible. So ये कह रहे हैं अतिरिक्त विश्वास के लिए तड़पता है, चाहे जीव जानवर के साथ ही क्यों ना हो, even if it is in the company of animals or birds. इसकी कोई चिन्हित पहचान नहीं हो पाती है, इसलिए बारंबार विश्वास का आधार बदलता है. As it is difficult to recognize precisely, because trust is not perceptible by senses. This is an explanation which I have added here. It was not written in Hindi. इसकी कोई निश्चित पहचान नहीं हो पाती. अब क्यों नहीं हो पाती निश्चित पहचान? क्योंकि विश्वास को हम इंद्रियों से नहीं पकड़ सकते हैं. ये समझ में आता है, लेकिन इंद्रियों से नहीं पकड़ में आता है. So it is not perceptible because trust is not perceptible by senses. That is why it is difficult to recognize it precisely. As it is difficult to recognize precisely, because trust is not perceptible by senses, the basis of trust keeps on changing. और बदलते बदलते थकना भी कहीं हो जाता है. Somewhere in all this, one feels completely dejected, and the person makes fresh efforts to establish trust with another person or stranger. पुनः किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ विश्वास सूत्र को जोड़ने का प्रयास भी करता है. इसको एक ही सेंटेंस बना दिया. The way I look at it is, Babaji is trying to explain a situation which we might have or must have seen around us also, by Nirikshan, Parikshan, Sarvekshan, that someone is not able to live with some people, then this person leaves that person. Okay, suddenly I remember we hear many times of some people who are, serially marrying again and again. You marry one person, you are not able to live with that person, you think this person is not good, you leave that person, you start living with another person, you are not able to live happily with that person also, you leave that person and go to the third one, fourth one. This is what keeps on happening. It is not only with male-female relationship or husband-wife relationship, even in friends also, even in jobs also. I have personally seen that when I was working in the corporate sector 30 years ago, I started working in a company. I did not like that company. I think that they are working unethically or they are not good. I thought, let me change the company. Okay. So I shifted to a second company after 3 years, second organization. There also I found the similar situation. Then I thought maybe these people are also not good. This management is also not good. I changed after 3 years, another job. So in 10 years, I had seen 3 different companies. Okay. And my purpose of changing the job was not for getting more money. My purpose of changing the job was, I wanted to work in an organization which is ethical, and for whatever reasons were there, I could not find it there. So in delusion, I also concluded what Babaji is explaining here. I concluded all companies are like this. Okay. And then I left the job. I decided I will not work anywhere because there are no companies worth working in, and I will take a break.
तो आदमी का विश्वास पूर्वक जीना जो है वो सुखपूर्वक जीना हो नहीं पा रहा है, जितना हम इसको अपने में भी देख पाए. Okay, in one's own life also, we can, if we can see this. I also, we all change some our surroundings, or like the people we are surrounded with. Many times we change geographies also. We are looking for a certain happiness, certain satisfaction, which we are not finding where we are. We change the scenario. We spend a few years there. There also we do not find it. Then we again change and go somewhere else. Right? इस सब में आदमी कहीं ना कहीं पे थक भी जाता है. One feels tired and dejected, hopeless. This is what Babaji is trying to say. If we can also, to some extent, feel in our own life experiences also. बहुत ही जबरदस्त समीक्षा भैया. ओके. इतना बारीकी से मतलब हर चीज को कवर किया. ठीक है. तो बाबा जी ने तो एक फ्लो में अपनी बात लिखी है. इट इज अवर जॉब, अवर ड्यूटी टू रिलेट इट विद रियल लाइफ. ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं. मानव अपने में विरक्ति और भक्ति की मान्यता से साधनारत होना पाया जाता है. ड्रिवन बाय द माइंडसेट ऑफ डिटैचमेंट एंड डिवोशन, सम इंडिविजुअल्स परस्यू साधना. अब ये सब जिनके साथ में भी जी रहे हैं, वहां पे जीना हो नहीं पा रहा है. सो व्हेन यू चेंज योर सराउंडिंग्स, व्हेन यू चेंज द पीपल यू आर सराउंडेड विद, वन इज you more or less keep it same, just change the, like I changed the job. So I'm still in the corporate world, but I just changed from one organization to the other. Here Babaji is saying sometimes people change overall also. Like they say this world is too materialistic. Okay. Here everyone is selfish. Okay. So let me go to spiritual part. Okay. So some people then go to that part. I mean, that extreme. So driven by the mindset of detachment and devotion, some individuals pursue sadhana. है ना, इस मान्यता में कुछ का साधनारत होना पाया जाता है. इसे कहीं अपने में संतुष्टि पाने के लिए साधना, अभ्यास, योग, चिंतन, गायन, प्रार्थना, विलपने के क्रम में गुजर जाता है. And for their own satisfaction, go through the processes like yoga, ruminating, singing, praying, and lamenting. And these are different ways of, devotion and detachment. गुजरते गुजरते थक जाना भी होता है. It often leads to exhaustion. कोई आशित घटना अर्थात मनोकामना सफल होने की स्थिति में सिद्धि हो गया मान लेते हैं. Okay, if their wishes get fulfilled, they attribute it to a miracle. ना होने की स्थिति में ज्ञान हो गया मान लेते हैं. Else they conclude that they have become wiser. ठीक है. So the way ज्ञान हो गया मान लेते हैं, इसको एक बार यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं. Okay. When I try to look at it, my analysis of this is that although at the root of many problems in relationships or in whichever surroundings we are living are because of dissatisfaction in relationships, but there are sometimes one can feel that there are some problems one is facing, probably for which God will help. Okay, maybe someone is not getting a good job, someone is not getting married, someone is not getting a child, and then you go to seek out, some spiritual gurus who will give you blessing that, your wishes may come true or something like that. So there also some people, while they feel that they are unhappy, they take this path also. So if their wishes get fulfilled, they attribute it to a miracle or a miracle man. Else, sometimes in the end, they also feel cheated, that, like we go to someone and eventually this person has also done a fraud on us.
Okay, they have taken our money and our wishes are also still not getting fulfilled, or in some other way they have exploited us. There are a lot of stories we read in the media about spiritual gurus also exploiting their disciples, है ना, ये सब आता ही है. So if their wishes get fulfilled, they attribute it to a miracle, else they conclude that they have become experienced, they have become wiser. The normal language which you use is, चलो थोड़ा experience ही हो गया हमको, है ना, पैसे गए, कुछ और गया, लेकिन चलो थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, वी विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक इन फ्यूचर. इस तरह का एक कंक्लूजन जो है वो निकल कर आता है. सो आइदर देयर विशेस गेट फुलफिल्ड और दे कंक्लूड दैट दे हैव बिकम वाइजर. समीक्षा हो जाती है. पुनः सर्वाधिक ऐसे साधक किसी मानव के साथ अपनी पहचान को स्थापित करने में प्रयत्नशील रहते हैं. Again, the majority of such seekers keep on striving for establishing their identity with other humans. Yes, Krishnan bhai. हाँ भैया, ये समीक्षा पूरी तरह से यूं समझ में तो आया, लेकिन जो विरक्ति और भक्ति की जो बात कही है, तो इसको हम फिर बुद्ध और महावीर या इस तरह के और भी जो लोग हुए हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में इसको हम कैसे समझ सकते हैं? हाँ, तो क्योंकि वो भी भैया, वो भी इन्हीं स्थितियों से परेशान. हाँ, बिल्कुल, है ना. तो जैसे सारे फैमिलीज भी खराब नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऑल फैमिलीज आर नॉट एबल टू लिव राइट, है ना. कोई ठीक से भी जी पाता है, अधिकांश ठीक से नहीं जी पाते हैं. इसी तरह से ये जितने भी हम स्पिरिचुअल गुरुज की बात करते हैं, इट इज नॉट दैट एवरीवन इज आउट देयर टू एक्सप्लॉइट अदर्स, है ना. कोई उनमें ठीक भी रहते हैं, लेकिन then we have heard about enough stories about people who are exploiting their followers also. तो बस इतना सा ही बात है. इट इज नॉट प्योर ब्लैक एंड व्हाइट के सारे ही खराब हैं या सारे ही अच्छे हैं. इतना बस ध्यान बना रहे. भैया मेरा क्वेश्चन एक्सप्लॉयटेशन के रेफरेंस में नहीं था. जैसे हम जो अभी समीक्षा किया है, तो परिवार में जो ट्रस्ट नहीं है या राइटली रहना नहीं जीना नहीं हो पा रहा, तो ऐसा ही जो मैंने पढ़ा है, बुद्ध या महावीर या उनके पीछे बहुत सारे जो लोग हुए हैं, वो भी राइटली या जीना नहीं हो पाने से अंदर दुखी हुए हैं, या जैसे मृत्यु के बारे में जान करके दुखी हुए हैं, अस्वस्थता के बारे में जानकर दुखी हुए हैं, तो फिर उन्होंने विरक्ति के पाद पे जाके बहुत गहनता से साधना की है और फिर वो उसी स्थिति को, अनुभव को उपलब्ध हुए हैं. तो ये इस कंटेक्स्ट में थोड़ा फिट नहीं बैठ रहा है. हाँ, इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं फिट बैठ रहा है. बिल्कुल ठीक है. वो इन सब महापुरुषों में, और जैसे उन सब का आप नाम बता रहे हैं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि हम आदरणीय नागराज जी को भी उस लिस्ट में, ये भी किसी सत्य की तलाश में अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए बाबा जी ने भी 20 साल लगाए. तो क्या है हमारा ना, वो प्रिय हित लाभ और न्याय धर्म सत्य जो मध्यस्थ दर्शन में शब्द निकल कर आए हैं, तो ये सारा का सारा जो समीक्षा वाला पार्ट हो रहा है, जो गलतियां हो रही हैं, ये भ्रमवश हो रही है ना. न्याय धर्म सत्य का पता नहीं है, मानव अजागृत है, गलतियां कर रहा है, इसलिए ठीक से नहीं जी पा रहा है ना. जिनका भी आप नाम बता रहे हैं, उन सब ने भी कहीं पर जीते हुए पाया शायद कि भैया वहां से ठीक जीना नहीं हो पा रहा है, एक तलाश में निकले और एक अच्छी चीज उनको भी मिली. मतलब जैसे भी उन्होंने फिर उसको बाकी आम आदमी के साथ में, पब्लिक के साथ में शेयर भी किया. मैं तो इसको ऐसे देख रहा हूं भैया. हाँ ठीक है भैया, ठीक है. तो पुनः सर्वाधिक ऐसे साधक किसी मानव के साथ अपनी पहचान को स्थापित करने में प्रयत्नशील होते हैं. अगेन, द मेजॉरिटी ऑफ सच सीकर्स कीप ऑन स्ट्राइविंग फॉर एस्टेब्लिशिंग देयर आइडेंटिटी विद अदर ह्यूमंस. ऐसे प्रयास में कोई काफी भीड़ इकट्ठा करने में सफल हो जाते हैं. जितना बड़ा भीड़ उतना बड़ा सिद्ध अथवा ज्ञानी माने जाते हैं. Okay? In such efforts, some are successful in gathering large crowds and having huge following. Bigger the crowd, the more knowledgeable and scholarly the person is assumed to be. ऐसे ज्ञानी और सिद्धों की सूची बड़ी होते हुए भी मानव परंपरा भ्रम जाल में यथावत बनी हुई है. Despite there being a long list of such scholars, human tradition continues to be in delusion as it is. So there are many claimants of knowledge,
and their list is long, but still the human tradition or humankind at large is still in delusion. क्योंकि सर्व मानव में समझदारी सुलभ नहीं हुई है. It is so because wisdom didn't reach everyone. और मानव लक्ष्य जीवन लक्ष्य का प्रमाण लोकव्यापीकरण हुआ नहीं है. एंड बिकॉज वाइड स्प्रेड एविडेंस ऑफ ह्यूमन एस्पिरेशन एंड जीवन एस्पिरेशन इज येट टू बी सीन, है ना. तो ये जीवन एस्पिरेशन क्या है? सुख शांति संतोष आनंद, है ना. हैप्पीनेस पीस कंटेंटमेंट एंड ब्लिस. एंड ह्यूमन एस्पिरेशन जिसको कि मानव लक्ष्य जो है वो क्या है? समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्त्र, रिजोल्यूशन, प्रोस्पेरिटी, फियरलेसनेस एंड कोएग्जिस्टेंस. तो मानव लक्ष्य और जीवन लक्ष्य का प्रमाण जो है उसका लोकव्यापीकरण नहीं हुआ है. ये हमको समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्त्र, सुख शांति संतोष आनंद इस तरह इसके साथ में इन लक्ष्यों को प्रमाणित करते हुए इंडिविजुअल्स और परिवार नहीं दिख रहे हैं. ओके, दिस इज द सोल रीजन. यही मुख्य मुद्दा है. So, दोबारा से पढ़ लेते हैं. It is so because wisdom didn't reach everyone, and because widespread evidence of human aspiration and Jivan aspiration is yet to be seen. This is the main reason due to which universal systems and undivided society couldn't be established so far. यही मुख्य मुद्दा है. इसी विफलता के आधार पर सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज बना नहीं है. यही संकट आज के लिए समस्त प्रकार की समस्या का कारण है. दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड ऑल द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड टुडे. इसी भ्रमवश हर मानव भय, प्रलोभन और समस्याओं के लिए स्रोत बना हुआ है. It is due to this delusion that all humans driven by fear and temptation have become originators of problems. हर मानव भ्रमवश, इसी भ्रमवश हर मानव भय, प्रलोभन और समस्याओं के लिए स्रोत बना हुआ है ना. और दे आर द ओरिजिनेटर्स ऑफ प्रॉब्लम. इससे छूटने से ही मानव कुल का कल्याण है. देयर इज लिबरेशन फॉर ह्यूमंस ओनली व्हेन दे फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम पीस. बताइए, ट्रांसलेशन वाइज, अंडरस्टैंडिंग वाइज. जी शिल्पा दीदी. भैया मेरे दो सजेशंस थे. एक वो था कि जहाँ और बदलते बदलते थकना भी कहीं हो जाता है, तो आपने लिखा था डिजेक्टेड, तो उसमें ब्रैकेट्स में एग्जॉशन भी लिख सकते हैं, एग्जॉस्टेड, बिकॉज इट्स अ फीलिंग ऑफ एग्जॉशन ना, थकना. तो ब्रैकेट में ऐड कर सकते हैं. एंड one feels completely dejected और exhausted, ऐसे लिख देते हैं सीधा. ब्रैकेट में भी क्या लिखना है? डिजेक्टेड और एग्जॉस्टेड. और दूसरा लाइक जो आपने बताया था ना कि न होने की स्थिति में ज्ञान हो गया मान लेते हैं, तो जब आपने एक्सप्लेन किया इट बिकेम क्लियर टू मी. सो मे बी वी कैन ऐड इन ब्रैकेट्स एक्सपीरियंस, जैसे आपने लिखा ना वाइजर. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वी हाँ कैन जी. ब्रैकेट्स में एक्सपीरियंस, बिकॉज एक्चुअली वी आर जस्ट लुकिंग इट एज एक्सपीरियंस, इट्स नॉट ज्ञान. हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है. तो आपने सीधा ऐसे ही explain किया लिखते था. हैं. एल्स दे कंक्लूड दैट दे हैव गेन्ड एक्सपीरियंस, ऐसा लिखते हैं. हाँ, कि वाइज भी ठीक था आपने जो लिखा था, बिकॉज ज्ञान लिखा है ना उन्होंने. तो हाँ, लेकिन वो मतलब किसी ने मेरे को धोखा दे दिया तो मुझे ज्ञान हो हाँ गया हाँ हो, ये कहते हुए बनता नहीं है. सिर्फ इतना ही बनता है कि भाई एक्सपीरियंस हो गया, ये एक्सपीरियंस हो गया कि आगे से ये वाली गलती नहीं करूंगा. लेकिन इवेंचुअली व्हाट पीपल डू इज दे डू नॉट रिपीट दिस मिस्टेक बट दे कमिट सम अदर मिस्टेक, है ना. फिर वहां पे भी धोखा खाते हैं, है ना. देन दे अगेन से कि भैया अब समझ में आ गई है. समझ में क्या आ गई है? कि ये वाली गलती नहीं करनी है. तो देन दे मेक सम अदर थर्ड काइंड ऑफ मिस्टेक. एक्चुअली तो वी नेवर लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स ना, बिकॉज मिस्टेक, द कोर वी हैव नॉट चेंज्ड. एग्जैक्टली. जो वो कहते हैं ना, यू नेवर लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. तो आई थिंक यहाँ पर मेरे को तो एक्सपीरियंस वर्ड से आई एम सेटिस्फाइड. आप बताइए, इट कन्वेज द मीनिंग ना. हाँ भैया, यस.
मतलब वही एक्सप्लेनेशन इज दिस, क्योंकि बाबा जी यस, ने ज्ञान लिखा था ना, आई हाँ वाज जी, हाँ ऑल्सो जी, कंफ्यूज कि ये ठीक ज्ञान है, कैसे, हाँ देन आई हाँ, गॉट टू नो द हम्म मीनिंग आपने जब बोला। हम्म, ठीक है, हाँ भैया, मीनिंग बेटर कन्वे कन्वे हो रहा है एक्सपीरियंस यूज करने से। जी जी, आई एग्री, थैंक यू। और बताइए। ठीक है, गुड, तो इसको भी जोड़ देते हैं वापस। ठीक है, एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसको भी कंप्लीट करना है इन द नेक्स्ट 5-7 मिनट्स। ठीक है, तो जी। छोटा सा ही है, तो मतलब मैं ही एक बार में कर देता हूं, नहीं तो समय एक बार पढ़ने में और दोबारा करने में लगेगा। तो सर्वशुभ का स्वरूप हर मानव परिवार में प्रत्येक नर नारी समझदारी से संपन्न होना एवं समाधान समृद्धि को प्रमाणित करना है। ठीक है, तो अब सर्वशुभ का स्वरूप क्या है? ऑल पर्सन्स मेल्स एंड फीमेल्स इन ईच फैमिली बिकमिंग accomplished with understanding and authenticating resolution and prosperity is the true form of universal well-being। है ना, ये सर्वशुभ का स्वरूप, सर्वशुभ का स्वरूप को बोला ट्रू फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल वेलबींग क्या है? हर मानव परिवार में, हर में प्रत्येक नर नारी समझदारी से संपन्न होना एवं समाधान समृद्धि को प्रमाणित करना, यही सर्वशुभ का स्वरूप है। ठीक है, एक बड़ा अच्छा सूत्र है मध्यस्थ दर्शन में, बाबा जी ने किसी पुस्तक में आया भी है, सर्वशुभ में स्वयं का सुख समाया है, स्वयं का शुभ समाया है। ओके, my own well-being or one's own well-being is included in the universal well-being। तो अभी हमारा ना यूनिवर्सल वेलबींग जो है, वो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो काफी आइडियलिस्टिक सा लगता है, वो हो नहीं पाएगा। तो फिर इसीलिए आदमी मोस्टली जो है वो सेक्टेरियन माइंडसेट के साथ में अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए इतने तक जो है वो शुभ सोच पाता है। तो सर्व शुभ है जो है ना, वो उसमें ही समाधान समृद्धि प्रमाणित होगा। दैट इज द ट्रू फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल वेलबींग। इस विधि से समृद्धि व्यवस्था का परिणाम है। इन दिस मैनर प्रोस्पेरिटी इज द रिजल्ट ऑफ सिस्टम्स। जितने भी सिस्टम्स हैं, इवेंचुअली उससे प्रोस्पेरिटी का एविडेंस मिलना चाहिए, निकल कर आना चाहिए। व्यवस्था पूर्वक श्रम नियोजन, श्रम नियोजन पूर्वक उत्पादन, उत्पादन के आधार पर समृद्ध होना देखा गया है। So it has been seen that systems facilitate proper deployment of labor. Proper deployment of labor results in production and production leads to families becoming prosperous. So ये इसका तीन चीजें जो है, तीन लिंक के रूप में इसका आया। व्यवस्था पूर्वक श्रम नियोजन, श्रम नियोजन पूर्वक उत्पादन और उत्पादन के आधार पर समृद्धि। Okay, so it has been seen that systems facilitate proper deployment of labor. Proper deployment of labor results in production, and production results leads to families becoming prosperous। इसी प्रकार से हर परिवार को प्रमाणित होना आवश्यक है। Evidence by all families in this manner is essential। पहले मंजिल के रूप में हर परिवार ही अपने वैभव का प्रमाण है। As a first objective, each family is the evidence of its own grandeur। इसका स्वरूप समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी, समाधान समृद्धि है। It is in the form of understanding, honesty, responsibility, participation, resolution and prosperity। तो इसका स्वरूप जो है ये सब है। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ, वो जो जिसको ईच फैमिली जो है वो समझदार होगी, तो उसका क्या है, कैसे दिखेगा वो? इट इज इन द फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऑनेस्टी, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और भागीदारी। तो अंडरस्टैंडिंग, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्टिसिपेशन, फिर आया समाधान समृद्धि, उसको लिखा रिजोल्यूशन एंड प्रोस्पेरिटी। तो इतने से जो है बाबा जी ने एक जनरल डिस्क्रिप्शन जो है ना, वो इन द 10 स्टेज्ड ऑर्डरलीनेस, फर्स्ट स्टेज जो थी
वो परिवार की जो है वो बात की, और आज हमने इसको कंप्लीट कर भी लिया है। फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ बाबा जी इज बिगिनिंग द नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज क्या है? व्हेन 10 फैमिलीज आर लिविंग टुगेदर, ठीक है, व्हाट विल बी देयर ट्रू फॉर्म इन अवेकन्ड सोसाइटी? वो कैसे, व्हाट विल बी माय रोल with another family with which I have daily interactions? They could be my neighbors, they could be my cousins who are living next door, है ना? ये जो कुछ भी है इस तरह से। तो सेकंड सोपान जो है, सेकंड स्टेज जो है, सेकंड स्टेप जो है, इसको आई थिंक विल टेक इट अप नेक्स्ट वीक। जी शिल्पा दीदी। हाँ भैया, जो जैसे लिखा है ना व्यवस्था, तो आपने मतलब इस विधि से समृद्धि व्यवस्था का प्रमाण है, तो आई थॉट व्यवस्था ऑर्डरलीनेस हम बोलते थे ना, तो मतलब एंड मतलब जिस सिस्टम या तो ऑर्डरली सिस्टम हो, कहाँ पर? ऑर्डरलीनेस हो। कौन सा वाला पहला हाँ, सेकंड लाइन। हाँ हाँ, इस इस विधि विधि से से, हाँ जी, समृद्धि व्यवस्था का प्रमाण है, तो हाँ जी, हाँ हाँ, देयर इज दैट इंग्लिश, in this in this manner. manner prosperity is the result of ऑफ systems. सिस्टम्स, हाँ तो जी, हाँ जी। मतलब आई वाज थिंकिंग ऑर्डरलीनेस ना, इट इज ऑर्डरली सिस्टम, मतलब हाँ हाँ, वो व्यवस्था और एक्चुअल में ना वो दोनों शब्द अभी लेकर के चल रहे हैं। तो पहले ऑर्डरलीनेस लेके चल रहे थे, अभी ग्रेजुअली ऐसे लगा कि काफी जगह के ऊपर वो ऑर्डरलीनेस भी थोड़ा ऑड लगता है, तो वी आर यूजिंग सिस्टम्स। तो यहाँ पर ऑर्डरलीनेस से ठीक लग रहा है सुनने में, या सिस्टम से ठीक लग रहा है, या ऑर्डरली सिस्टम्स से ठीक लग रहा है? मतलब वही ब्रैकेट्स में इफ यू राइट ऑर्डरलीनेस देन इट बिकम्स क्लियरर। आप सिस्टम यूज कर सकते हैं बट ब्रैकेट में ऑर्डरलीनेस, क्योंकि सिस्टम तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, एक्चुअली गुड। इसको कंटिन्यूशन में भी ना, इट हैज बीन सीन दैट ऑर्डरलीनेस फैसिलिटेट प्रॉपर डिप्लॉयमेंट ऑफ लेबर, प्रॉपर डिप्लॉयमेंट, मतलब आई थिंक जस्ट सिस्टम इज नॉट इनफ, दैट इज तो माय, यहाँ पे भी ऑर्डरलीनेस कर दें? हाँ दैट इज माय व्यू, बाकी कोई बोल सकते हैं। नहीं, ऑर्डरलीनेस ही ज्यादा परफेक्ट लग रहा है, क्योंकि ठीक है। सिस्टम्स तो अभी भी जो बने हुए हैं वो भी सिस्टम्स में ही जाते हैं, तो वो उसमें मतलब ऑर्डरलीनेस से लगता है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम की। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक हमारे ये को भैया, सेंस कन्वे हो जाए। हाँ जी, बताएं देव सॉरी, भाई। ये प्रॉपर वर्ड को हम लोग एक बार यूज कर सकते हैं क्या, बार बार की जगह पर? कहाँ पर लिखा हुआ? अच्छा, ओके। वही ऑर्डरलीनेस हाँ के हाँ, इट हैज जगह, बीन सीन दैट ऑर्डर एज ए प्रॉपर डिप्लॉयमेंट ऑफ लेबर, लेबर प्रॉपर एंड डिप्लॉयमेंट, प्रॉपर डिप्लॉयमेंट की जगह पर प्रॉपर डिप्लॉयमेंट ऑफ लेबर, डिप्लॉयमेंट ऑफ लेबर रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन, ये ऐसा ऐसा कह रहे हैं। प्रॉपर का रिपीटिशन आप हटाना चाहते थे? प्रॉपर यहीं पे लिखा हुआ है, कहीं और पे लिखा हुआ था, यहीं लिखा हुआ इस सेंटेंस में तो 2 बार आया था। है। है ना, जब ये एक्चुअल में जो ठीक है, व्यवस्था है ना, व्यवस्था का मतलब ही एक तरह से प्रॉपर वाला ही है। व्यवस्थित तरीके से होगा तो प्रॉपर होगा, अव्यवस्थित होगा तो वो इम्प्रॉपर होगा। तो अभी भी देखें हम, देखो मानव जाति में मेहनत तो लोग कर ही रहे हैं ना, सुबह से शाम तक पूरे शहर में देखो इतना भाग दौड़ मचा हुआ है, तो मेहनत हो रही है, लेबर इज गेटिंग डिप्लॉयड, लेकिन वो कुछ कुछ उसके पीछे जो विजडम वाला पार्ट था वो लैकिंग है, तो मतलब वो इम्प्रॉपर हो जाता है बेसिकली। तो यहाँ पर इस तरह से दैट ऑर्डरलीनेस फैसिलिटेट्स प्रॉपर डिप्लॉयमेंट ऑफ लेबर, देन डिप्लॉयमेंट ऑफ लेबर रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन लीड्स टू फैमिलीज। मुझे लगता है भैया दोबारा भी आएगा प्रॉपर। दोबारा भी आएगा, ओके, ठीक है। एक ही बार आ रहा था देव भाई, कोई बहुत ज्यादा बार भी नहीं आ रहा था, तो लिख ठीक भी है, सकते हैं। ठीक है।
बताइए, एनीथिंग एल्स? बुक के अकॉर्डिंग कितना हुआ भैया है? मैं लास्ट टाइम पूछ रहा था। हाँ हाँ, नहीं नहीं, तो अच्छा क्वेश्चन है ये कि कितना हुआ। सो भैया आज हो गया है 1.5 पेजेस एग्जैक्ट। ओके, सो ठीक है, आई थिंक बेटर देन 1 पेज, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ठीक है। सो गुड, गुड, थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. If there are any closing remarks or observations, we can spend a few minutes on that. Otherwise, we can close the meeting. भैया वैसे तो कई बार पढ़ा है सुना है, लेकिन एक बार फिर भी समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और भागीदारी, तो भागीदारी समझ में आ रहा है और ये भी समझ में आता है। ईमानदारी को थोड़ा यहाँ पर किस सेंस में, थोड़ा समझदारी के बाद ईमानदारी रखा गया, तो समझदारी के साथ जिम्मेदारी और भागीदारी आ जाती है, तो यहाँ ईमानदारी से क्या हुआ? थोड़ा सा ना भैया इसकी परिभाषा वगैरह भी देखिए। मेरे को लग रहा है अभी हम एक चर्चा करेंगे तो फिर वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मतलब इट्स ऑलरेडी 9:35 हो गया है। तो आप भी थोड़ा सा देखिए भैया, आपके पास में ऐप है जिसमें ये परिभाषा लिखी हुई है सारी? हाँ हाँ है भैया, मैं देखता हूँ। है ना? हाँ, तो आप भी थोड़ा सा देखिए, तो आप सबकी परिभाषा देखेंगे, कुछ कुछ अपने में भी स्पष्ट होगा कृष्ण भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एनीथिंग एल्स? ठीक है, then we close the meeting today. Thanks for joining. We meet again on 3rd December, same time, 8 a.m. India time. नमस्कार. थैंक यू भैया, Namaste. Thank you. नमस्ते, नमस्ते. थैंक यू सभी को।